सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गीतांजलि में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस की, जो कि बेसिकली एक रिलेशनशिप है सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बीच में। मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ with dot product n cap ds that is equal to the volume integration divergence f dv। चलिए इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, नीचे दिए गए न्यूमेरिकल में इस चीज़ को समझते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टेट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दैट इज द सेकंड डेरिवेशन सरफेस इंटीग्रेशन f n cap ds where s is the surface of the sphere and the vector f is given 3x iota plus 4yj and 5zk। So first of all इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक 3D स्फीयर दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 16। ओके, एंड वेक्टर एफ दे रखा है। सो एज पर द थ्योरम, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सरफेस इंटीग्रेशन है वेक्टर एफ का विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल डीएस, वो डाइवर्जन ऑफ एफ के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसको क्या क्या दे रखा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। सो हियर इज द सॉल्यूशन। सो हियर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेक्टर एफ दे रखा है। सो हियर वेक्टर एफ दैट इज इक्वल टू 3xi प्लस 4y ऑफ j प्लस 5g का। Okay, so we have to find out the divergence of f. So therefore the divergence f, that means that del operator dot product with vector f, and the value of del operator is basically del upon del x iota plus del upon del y of j plus del upon del z of k, and the value of dot product, the value of vector f 3x iota plus 4y j cap and plus 5z k cap. Okay, so the final it will be dot product, so it will be del upon del x 3x plus del upon del y, that is 4y plus del upon del z, and that is a 5z. Okay, so finally what it give you, it give you that 3 plus 4 plus 5. Okay, so it's give you finally 14 units. Okay, and as per the theorem, if we talk about the theorem, so by theorem we have, by theorem that is surface integration f dot n cap ds, that must be equal to volume integration divergence f dv. Okay, so finally it will be, integration v integration 14 dx dv dy and dz. Okay, so that is equal to 14 times of integration volume integration dx dy and dz, or simply 14 times of volume. Okay, so here that is volume of sphere, so that is equal to 14 times of
volume of sphere, that is basically volume of sphere. Okay, why here we have used in volume of sphere? Because volume of the equation of volume is given, so that will be 4 by 3 pi r cube simply. Okay, and here the r is basically the 4, so we can say that 14 into 4 by 3 into pi, and the value of r, that is a 4 the power 3. Okay, so when you will solve, the final answer will be, that is a 3584 times pi. Okay, so this is the answer. उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले हम वेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि इक्वेशन क्या है, हमारा कर्व कैसा है। सो यहाँ पर एक स्फेरिकल कर्व क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि जिसकी इक्वेशन है आपके पास में बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज योर spherical curve. Okay, so and comparing the equation you will find out the radius. So r square equal to 16, so वहाँ से r की वैल्यू निकल के आ गई है जो कि +-4 है। ओके, और वेक्टर f दे रखा है, तो सबसे पहले डाइवर्जन निकालेंगे। डाइवर्जन निकालने के बाद में उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देंगे और वॉल्यूम इंटीग्रेशन करने के बाद उसको वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि गॉस डाइवर्जन थ्योरम क्या होती है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और इसके बाद में हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो सपोज so evaluate surface integration f n cap ds where the value of f, vector f, is equal to 4xz I and y square g cap plus yz k cap, and S is basically the surface. S is the surface of the cube, okay, that is bounded by x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, and y equal to 1, and g equal to 0, g equal to 1, etc. So चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमें क्या देख रखा है, हमको यूज़ करना है सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है। सो हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। सो गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए हमें बेसिकली डाइवर्जन ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। सो हियर इज द सॉल्यूशन। सो फॉर दैट वी हैव टू, that the solution is, so here the vector f is given as per question, that is 4 times x z iota plus mafia, that is minus y square j cap plus yz k cap. So we will find out the divergence. Okay,
So the divergence of vector f, that is equal to del operator dot product with the given vector f, and that will be del upon del x iota plus del upon del y of j plus del upon del z of k. So this is the value of del operator, and the vector f is given, that is a 4x z I cap minus y square j cap plus yz k cap. Okay, so when we apply the dot product, so that will be del upon del x times of 4x z plus del upon del y times of minus y square plus del upon del z, that is equal to yz. Okay, so when you apply this, you will receive that 4z plus minus, that is minus 2y and plus y. Okay, so finally that is a 4z minus y. Okay, so this is the basically the divergence. Okay, so next what we do, so we find out the divergence. So as per the theorem, so by theorem, so this is the value of divergence f. Okay, so here the divergence f, that is equal to 4z minus y. So we have to apply the theorem. So by theorem that surface integration vector f dot n cap ds, that is surface integration, that is equal to volume integration the divergence f dv. So that will be volume integration 4z y dv simply. Okay, so when it will be converted, so that will be integration 0 to 1 0 to 1 0 to 1, that is 4z minus y dx dy and dz. Okay, so when we'll solve this particular questions, so that will be simply 3 by 2. Now the question arises ki how we will solve. So you have two options, either solve by dx first, then dy, then dz, or simply first dz, then after dy, then after dx. So it's up to you how you will solve. Okay, so उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, और फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं. चलिए मैं इसका एक बार इंटीग्रेशन कर ही देता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस ना हो. So we can change this order also. So it can also written as the 0 1, that is one block, and 0 to 1, that is one block, 0 to 1, that is one block, and that is a 4z minus y dz dx and dy simply. Okay, so that this can be written as 0 to 1 0 to 1, and that will be 4z square by 2 and yz, and that is equal to 0 to 1 simply dx
and dy. Okay, so on further solving, that is 0 to 1, 0 to 1, and that will be 2 minus of y, that is dx dy simply, or 0 to 1, 2y minus y square by 2, 0 to 1 dx. Okay, or simply it can be written as 3 by 2 times of 0 to 1 dx, or simply 3 by 2. सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने dz के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया है, फिर dy के रेस्पेक्ट में, और फिर dx के रेस्पेक्ट में. सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं. चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं और डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे कि ये थ्योरम्स हम कैसे अप्लाई करते हैं. ओके, सो चलिए एक नई प्रॉब्लम लेते हैं सबसे पहले. सो हियर वी हैव द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन आर बेसिकली द फाइंड surface integration ds, and where the vector f is given as 2x plus 3z I and xz plus y j cap plus y square 2z k cap. Okay, and s is the surface of the sphere having center 3, minus 1, 2, and radius 3. So as usual, first of all we will find out the value of f. So here the value of f, that is equal to 2x plus 3z, that is iota, minus xz plus y times of z plus y square plus 2z k. Okay, then after the divergence of f, that will be del by del x times of 2x plus 3z plus, that will be minus del by del y times of xz plus y plus del by del z times of y square plus 2z. Okay, so when you apply, that will be 2 minus, that will be 1, and that will be 2. Okay, so finally we have 4 minus 1, that is equal to 3. Okay, so therefore by theorem, by theorem, okay, so that will be surface integration f dot n cap ds, that is equal to volume integration divergence f dv simply. So we can write here that volume integration 3 dv simply. Okay, so that's give you 3 times of v. Okay, so that's give you 3 times of v,
3 times of V. So here the V for the volume of a sphere, so that is equal to 3 times of volume of sphere, the volume of sphere, that is okay, and we know the volume of a sphere, that is equal to 4 by 3 pi r square simply. So it will be 4 pi, and the value of mass here, that is not square, that is a cube basically. So 4 pi r cube simply, and the value of r, that is equal to 3 as per the question. So it will be again 108 times of pi. So this is your answer. सो उम्मीद करता हूँ कि डाइवर्जन थ्योरम क्या होती है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कंसर्न कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे आपको दे रहा हूँ, जिन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको समझ में आएगा कि आपने जो भी ये टॉपिक पढ़े हैं वो आपको समझ में आए या नहीं आए। ओके, सो नोट डाउन कीजिए फटाफट। असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए आप, जो क्वेश्चन हमारे इस प्रकार हैं। ओके, सो हियर इज बेसिकली द ट्यूटोरियल शीट, so that is worksheet here, the worksheet to solve this question. So first question is use divergence theorem, that is question number 1. Use divergence theorem. Okay, where vector f, that is equal to 4x iota 2y square j cap plus z square k. Okay, and the surface S, and the S is the surface is bounded the region x square plus y square, that is equal to 4, and z equal to 0, 3. So the answer of this question is basically 84 times of pi. Okay, same as एक दूसरा क्वेश्चन है, question number 2, that is basically question number 2, that use the divergence theorem to show that surface integration, that is a divergence, that is the del x square plus y square plus z square ds, that is equal to 6 times of volume, where the S is any closed surface, okay, enclosing volume V. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप सभी लोग आसानी से। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें जो भी दे रखा है सो उससे हम डेल ऑपरेटर इसमें अप्लाई करेंगे। डेल ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद में हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हम उसमें डाइवर्जेंस ऑपरेशन को लगा देंगे। ठीक है, सो चलो देख लेते हैं बेसिकली कि इस क्वेश्चन को हिंट के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो hint for the question, the answer will be, okay, we have to show it. So there is
simply we have to prove. So hint to solve this question, first of all, del x square plus y square plus z square means, that is the operator del. Operator del means del is the function of this, so it means that is equal to basically the del operator dot with x square iota this iota plus y square j cap plus z square z square. That means basically that is basically the del operator, the value of del, that is iota del upon del x plus j cap del upon del y plus k cap del upon del z, and the value that is x square plus y square plus z square. Okay, so the value of this, that it will be 2x iota plus 2y of j cap plus 2z of k cap simply. So that will be 2xi plus y of j plus z of k. Okay, so we will solve such a way that we finally got the answer and how we have to apply. So again here, now the divergence f, that will be again del with dot product, that is a 2x iota plus y of j plus z of k simply. So it's give you the 2 times of 1 plus 1 plus 1 simply, so it will be 6. Okay, so by theorem, that will be integration f dot n cap ds, that is equal to volume integration of divergence f dv simply. So that is equal to that 6 times of integration v and dv, that is equal to 6v equal to RHS. Okay, so that we have to proved, so that's proved. सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं. ओके, सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सो हैप्पी लर्निंग. ओके.